A round table cover has six equal design as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, okay, I'm showing how exactly we are having the cover. Find the cost of just a second. Making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Please, okay, let me explain let me give the explanation, then you can start solving. So basically, we are having a table cover which looks like this. It may know these are the segments, okay. In this figure it doesn't look same, but in actual figure it is same, okay. So a round table cover has six equal design. Here design is there, okay, whatever be the design, here designs are there, here also, here also, and here also, okay. A round table cover has six equal design as shown in the figure. So these are the designs which we are having on the table cover. If the radius of the cover, radius is given, okay, the radius is given as 28 centimeter, okay. Find the cost of making the design. That means we have to find the area of the segment over here. All six segments are exactly same. First, we'll be finding the area of the segment. Okay, and then we will be finding the total cost. What can be done over here? How we'll be finding the area of the segment? Anyone? Yes. What can be done over here? Yes, Galvin, Fazan, Ibad. See the figure carefully, think about it and tell me. Okay, we are almost done with this chapter. We are going to start the next chapter. Please tell me. Yes. Can you see, for finding the area of the segment, what we do? What is the formula? Anyone? एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम? अगर मैं बोलूं किसी एक सेगमेंट का चलो पहले एरिया निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? यस इबाद, आर यू देयर? Yes, ma'am. How we find the area of the segment? Ma'am, I'm not sure. Can you do this one? Can you please repeat?
I'm not sure. Can you do this Yeah, I'll be question? showing the process, what can be done over here. But how we exactly find the, if I will give you a segment, okay, if I will give Ma'am, you, yeah, ma'am, are you asking the area sector, ma'am? area of sector minus Ma'am, area of triangle, we do ma'am, that, right? it's theta with 360 into pi r square. Yeah, okay. So here we are having six segments, all are same, okay, and we are having, for finding the segments area, we have already done the discussion that if we are having a segment like this, and if we have to find this area, we take the help of sectors area. We first try taking it out, what is the angle over here, is it given or what is the angle over here. With the help of the angle given, we find the sectors area, okay, and from that we subtract the triangles area, and that way we get the area of the segment, right? Okay, so sectors area minus triangles area. Here angle we must know, then only we'll be able to use this formula for sector area, that is theta by 360 into pi r square. Okay, and triangle area, we try finding the area of the triangle by just dropping the perpendicular, using the trigonometry and all. Okay, so here how we'll be finding, here in this particular question angle is not given. Okay, no angle is given. You can read the question carefully. We don't know the angle, but we'll be able to find the angle because six equal segments are there. If I will try joining it like this, then 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 we are getting how many sector? One, two, three, four, five, six. Total six sectors we are getting. Okay, six segments are there. So of course six sectors will be there. That means 360-degree. Do we want to divide in six equal part? Yes. To get each one's area, we want to divide the complete circle, the complete angle 360-degree by 6, and that is giving us 60-degree. So each angle will be 60-degree over here, 60-degree over here. If any way we can find one of the sectors, okay, not the sector, segments area, then we'll be multiplying it by 6, and then we will say all the design, this shaded parts area we have found already. If any one of the shaded part area, any way we can find, okay, then we can multiply it by 6, and then we can say that yeah, we ended up getting all the shaded parts area. Okay, so what we will do for that, we'll be taking the sectors area. Now we know the angle is 60-degree, so sector area हम निकाल पाएंगे. अब हमें सेक्टर एरिया निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. वी नो द सेक्टर एरिया फॉर्मूला, दैट इज थीटा बाय 360 into pi r square. Okay, theta is 60 by 360 into pi r square. R is already given. ऐसे हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर पाएंगे. अब इसमें से ये सेक्टर, सपोज ये सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर लिया, ये पूरा एरिया हमने फाइंड कर लिया. ओके, बट हमें तो सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, या इस पूरे सेक्टर से हम ये जो हमें ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब्ट्रैक्ट, जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कंप्लीट एरिया में से, हमें शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा. ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम we'll be using the older formula. Okay, area of the triangle, that is 1 by 2 into base into height. Okay, so area of the triangle, let me write the formula. It will be 1 by 2 into base, okay, into height. Now we are having circle like this. I'm drawing only one segment, okay, this area. Here we found that the angle was 60-degree. Okay, it was 60-degree. So, and this one, OAB, OA and OB both are radiuses, right?
OA and OB both are radiuses, right? So this is also 28, this is also 28, which is given in the question. Now it looks like an equilateral triangle, yes or no? One of the angle is already 60 and we are going to say that the other two angle will be same. Angle A will be equals to angle B. एंगल ओ हमें ऑलरेडी पता है कि 60 डिग्री है, और ये जो दो बचे हुए एंगल है ये हम अभी कहने ही वाले हैं कि ये दोनों आपस में सेम होंगे. क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल. और जैसे ही हमने बोला ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे, तो क्या हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से ये समझ में आ रहा है कि x प्लस 60 डिग्री तीनों मिला के 180 डिग्री क्रिएट करेंगे, जिसका मतलब है ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा. इसका मतलब क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है? यस, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. और यहाँ तो एरिया निकालना और भी सिंपल होता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का तो फॉर्मूला हम रेडीमेड फॉर्मूला हमें पता है. We know for equilateral triangle the area is root 3 by 4 a square, where a is the side. So one of the side is 28, another side is 28, AB is also 28. Okay, how we got to know it is equilateral? With the help of the angles. Okay, so directly we'll be using this formula, that root 3 by 4. Okay, note it. I'll not be showing the solutions. This 28 square. This way you will be doing the calculation of this one, then you will be getting the triangles area. Now सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये सेगमेंट का एरिया मिलेगा. अब हमारे पास ऐसे कितने सारे सेगमेंट्स है? सिक्स सेगमेंट्स है. तो जो हम फाइनल सेगमेंट का एरिया निकालेंगे उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें सारे सेडेड पार्ट्स का एरिया मिलेगा. और जैसे ही हमें सारे सेडेड पार्ट्स का एरिया मिलेगा, वैसे ही हमें यहाँ पे एरिया तो फाइंड करना ही नहीं था, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टोटल कॉस्ट फाइंड करना है. इस डिजाइन, what will be the total cost to make the design at 0.35 per centimeter square. Okay, 0.35 per centimeter square. If the cost is this one, then what is the total cost? So 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल सेगमेंट का एरिया पहले हम फाइंड करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली कॉस्ट फाइंड करेंगे. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है 0.35. टोटल हमारा जितना एरिया होगा उतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट हम फाइंड करेंगे. एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, Yes, ma'am. everyone got it. So you have to do it by yourself. Now I was about to start a statistics over here. Let's continue. Yes, ma'am. We are left with statistics, coordinate geometry, and surface area and volume, and probability. Okay, statistics, coordinate geometry, these two chapters are not that huge. Okay, probability also, surface area and volume will be it may take time. So yeah, we'll be able to cover the syllabus very soon. Are you practicing? Yes. Okay, so just a second now. Yes. Hi Sumaya. Hi Noah. How are you? I'm good, ma'am.
we are going to start statistics. Okay. Now, at first, we'll be having the discussion of how to find the mean. Okay. Mean of group data. Okay. When the data is not grouped, then you have already learned how to find the mean. Okay. Let me take one example. Suppose marks of, just a second. Suppose marks of 13 students are given like this. So marks are given like this. 10 marks, 20 marks, okay, 36 marks, 40 marks, 50 marks, 56 marks, okay. These are the marks students have got. 13 students are there, and number of students, which we can call as a frequency as well. One student has got 10 marks, okay. One student has got 20 marks. Three student has got 36 marks, okay. Four student has got 40 marks. Again, three student has got 50 marks, and two student has got 56 marks. See, frequency means, does, please don't get confused. Frequency का मतलब होता है जो हमारे डेटा है, जैसे कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मार्क्स के बारे में, तो कितने स्टूडेंट, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमेशा शो करेगा, या फिर नंबर ऑफ वॉट एवर बी द डेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो हमारा डेटा हमें दिख रहा है 10, 20, 36, 40, ये कितनी बार रिपीटेड है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 लिखा, मतलब एक एक ही ऐसा बच्चा है जो 10 मार्क्स लेके आया है, और एक ही ऐसा बच्चा है जो 20 मार्क्स लेके आया है, जबकि मेरे बैच में ऐसे 3 बच्चे हैं जिन्होंने 36 पाया। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं किस नंबर्स लिखना शुरू कर दूं ऑल ऑफ सडन, लाइक द डेटाज आर इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, 5, 10, 15, मे बी द नंबर ऑफ प्लांट्स, और based on any data, okay, 20, then 35, then 36, then again 5, then 20, then again 35, okay. So ऐसे वाले डेटा में जैसे हम कैसे हम काउंट करते हैं कि 35 1 टाइम्स, 35 2 टाइम्स, how many times 35 is getting repeated, 2 times, how many times 5 is there, 2 times, तो इससे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओके। जब जब तुम लोग लोअर क्लासेस में थे तो ऐसे काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखते थे कि एक डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर हमें फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे इन टेबुलर फॉर्म वी स्टार्टेड गेटिंग द फ्रीक्वेंसी, दैट 10 is one time, 20 marks, like one time it is there, 36, three times 36 can be seen in our data, 40, 4 times 40 can be seen in our data, okay. 53 times 50 is there in our data's collection, okay, and 56 2 times 56 is there। इसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कि हमारा जो डेटा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी देगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड अब जब हमें मीन फाइंड करना है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये डेटा ग्रुप डेटा नहीं है, ओके, अनग्रुप डेटा है। यू कैन सी 10, 20, 36 जस्ट सेपरेट डेटा वी आर हैविंग। ऐसे डेटा में जब भी हमें फ्रीक्वेंसी जब भी हमें मीन फाइंड करना होता है, तो एक सिंपल सा रूल था कि जो नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि 10, 20, 36, 40, 50, 56, इन सारे ही नंबर को ऐड कर लेते हैं, और फिर काउंट करते हैं कितने डेटाज है हमारे पास, उससे डिवाइड कर देते हैं। ऐसे हम क्या फाइंड करते थे, मीन फाइंड करते थे, राइट, राइट। अगर मैं बोलूं आज आज हमारे बैच में कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है,
Ibad is there, Galvin is there, Fazan is there, Sumaya is there, and Noah is there. If suppose I'm writing, the marks of each one of you. Okay, so suppose Ibad is there, Sumaya is there, okay, Noah is there. I'm just writing the first alphabet. Then Fazan is there, and then Galvin is there. Okay, these are the students who have joined today. I have taken a surprise test. Out of 10, you you have got, like, one of the student got 8, another student got 9, another student got maybe 7, 6, like that. Okay, again 6. So these are the data. Okay, now if we have to find the mean, what we will do? 8 plus 9 plus 7 plus 6 plus 6 over 1 2 3 4 5. Okay, 1 2 3 4 5 5. This is how you used to find the mean, right? Right. Yes, ma'am. Okay, now here, when the data is, I have not taken huge data, but when the data is like this with frequency, what we will say, 10 is there one time. So 10, then, okay, 10 into 1. Why we are doing the multiplication? Why we are doing the multiplication? Because we understand. Do you understand why we are doing the multiplication? Anyone who can explain why we are doing the multiplication over here? Why I am going to write 10 into 1, then 20 into 1, then 36 into 3, okay, then 40 into 4. Why I am multiplying it? Anyone who can tell me? To make the calculation easier. Yes, so that the calculation will be easier. Okay, we understand that ये 10 जो है हमारे डेटा में एक बार ही दिख रहा है, 20 भी एक बार ही है, 36 कितनी बार है? 36 1 2 3 3 बार है. ओके, ऐसे ही 40 कितनी बार है? 1 2 3 4 4 टाइम्स 40 है. और 50 कितनी बार है? 1 2 3 3 टाइम्स 50 है. और 56 कितनी बार है? 56 2 टाइम्स है. तो एक ही नंबर को बार बार ऐड करने की बजाय 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, मीन निकालते टाइम तो ऐड तो हम करेंगे ही सारे डेटा को लेके. बट हमने क्या सोचा कि जो सेम सेम नंबर है उसे अगेन एंड अगेन ऐड करने की बजाय हम 4 into 40 भी तो लिख ही सकते हैं, राइट? डू यू नो दैट? Yes, यस. ma'am. Yes. Yes. इसलिए जब भी हमारा डेटा ऐसे फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ रहता है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. जो हमारा डेटा है 10 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर जैसे डायरेक्टली 10 भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. 20 into 1 और डायरेक्टली 20 भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट 36 into 3 हम लिखेंगे. क्यों? क्योंकि रादर देन एडिंग 36 प्लस 36 प्लस 36, हम सोच रहे हैं कि चलो लिख लेते हैं 36 into 3. ये कैलकुलेशन करने में सिंपल होगा और जल्दी हम कैलकुलेट कर पाएंगे. सिमिलरली 40 into 4, सिमिलरली 50 into 3, सिमिलरली 56 into 2. ओके, ऐसे करके हमने सारे ही नंबर बस ऐड किए हैं. ओके, अभी डेनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी जितने डेटाज है, कितने डेटाज है हमारे पास, वो लिखना अभी बाकी है. ठीक है, तो पहले हम सारे ही नंबर को ऐसे अरेंज कर लेते. जस्ट अ सेकेंड. So first we'll be doing the multiplication like this: 10 into 1, then 20 into 1, then 36 into 3, okay, then 40 into 4, then 50 into 3, then 56 into 2. Okay, this is how we'll be doing the multiplication, divided by how we have added the number of student. Okay, 5 student were there in our case, in our batch today, so I have divided by 5. But here how many students are there? So 1. We will be adding the frequency. ओके, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो 1 + 1, देन +3 +4 +3 +2, ये सारे फ्रीक्वेंसी को जैसे ही हम ऐड करेंगे तब हमें पता लगेगा कितने स्टूडेंट्स हैं. क्यों हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही यहाँ जो मैंने डेटा लिखा है, देखो ध्यान से, 1 टाइम्स 10 है 1, ओके 1, देन 20 1 टाइम्स है 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 14. Okay, 14 are there. Let me check. 1 plus 1, 2. 2 plus 3, 5. 5 plus 4, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes, 14. 14 students are there. Are you getting me? Yes. Are you getting me? आ रहा है सबको समझ में कि जब भी हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है तो हम जो फ्रीक्वेंसी को जैसे ही ऐड करेंगे हमें पता लगेगा कितने कितने डेटा हैं, कितने डेटा पॉइंट्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ डेटास कितने हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा? जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। आ रहा है समझ में? Yes. एवरीवन गेटिंग इट? Yes. आर यू गेटिंग इट? Ma'am, can you explain it again? Yes, Noah, you said, can I explain again? Yes. I said that when the data is given in tabular form like this, okay, just a second. When the data is given in tabular form like this, that marks are 10, 20, 36, 40, 50, 56, and the frequency is given like this 1, 1, 3, 4, 3, 2. Then while finding the mean, what we will do, we will be in numerator, we will be writing 10 into 1 plus 20 into 1 plus 36 into 3 plus 40 into 4 plus 50 into 3 plus 56 into 2. Why? Because here also we are just adding all the numbers. Okay? Into 2 into 3 is helping us to minimize the expression. Okay? The writing part we are minimizing and it will be easier to calculate it faster. Now in the denominator, while finding the mean, we count the number of data. Like now only I have found the mean of this marks, that Ibad, this Sumaya, Noah, Fazan, Galvin, these are the marks. And while finding the mean, what I have written in the denominator? Total number of students. Okay? Or total number of data. Okay, how many data exactly we are having, that only I have written in the denominator. ऐसे ही तो मीन फाइंड करते हैं, ठीक है? तो जब हमारा टेब्यूलर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा डेटा, तो फिर कैसे डेनोमिनेटर में किसे लिखेंगे हम? फिर से मार्क्स को ही ऐड करके लिख देंगे? नहीं। जब हमारा टैब्यूलर फॉर्म में ऐसे कुछ डेटा हमें दिया हुआ हो और क्वेश्चन बोले कि मीन फाइंड करना है, तो हम वहां पे डेनोमिनेटर में क्या रखते हैं? ये जो सारे फ्रीक्वेंसीज है इन्हें ऐड करके लिखते हैं। क्यों क्यों फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखते हैं? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज है यही हमें बता रहे हैं कि कौन सा डेटा कितनी बार है। एक बार 10 है, उसके अलावा एक बार 20 है, उसके अलावा 3 बार 36 है, उसके अलावा 4 टाइम्स 40 है, उसके अलावा 3 टाइम्स 50 है और उसके अलावा 2 टाइम्स 56 है। अगर हम इन सारों को ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितने डेटा हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? Noah, are you Yes. getting it? Yes, ma'am. Okay, that's why we keep the frequency in the denominator. Nothing hi-fi. The same thing we are doing. Okay, with proper understanding. So total 14 data points we are having. 14 I have written in the denominator. ऐसे हम फाइंड करते हैं मीन जब हमारा डेटा अनग्रुप हो। तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी यू मस्ट हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास। ओके, मीन फाइंड करने का क्या है मेथड? जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके न्यूमरेटर में लिखते हैं और डेनोमिनेटर में जो भी फ्रीक्वेंसी है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ओके, नाउ जब हमारे पास ग्रुप डेटा हो तब फिर क्या करेंगे? ये तो हुआ अनग्रुप डेटा। डेटा अनग्रुप था, सेपरेट डेटास थे, दैट 10 मार्क्स 20 मार्क्स 50 मार्क्स वॉट एवर। बट जब डेटा ऐसा कुछ दिखेगा, लेट मी राइट इट, जब क्लास इंटरवल दिया
ओके 10 to 25, 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट ने मार्क्स पाया है? 2 स्टूडेंट्स ने. ओके 25 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स पाया है? 3 स्टूडेंट्स ने. ओके ऐसे ग्रुप डेटा जब दिया हुआ हो तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये दिस इज फ्रॉम क्लास 10. ओके from 40 to 55 how many students have got the marks? 7 students. Okay from 55 to 70 how many students have got the marks? 6 students. From 70 to 85 how many students have got the marks? 6 students. Okay from 85 to 100 how many students have got the marks? This is 100. 6 student. Okay here again it is written that number of students, that means frequency only. When the data is given in grouped manner, okay grouped data when we are having, then how we'll be finding the mean. Okay so we will make a table. Let's make a table. Class interval I'm copy pasting over here. Number of student or frequency, it's the same thing. Okay from 10 to 25, from 25 to 40. ये क्लास 9 में ही तुम लोगों ने सीख लिया होगा कि अगर डेटा ऐसे ग्रुप मैनर में ये 25 पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट इंटरवल हमारा 25 से ही स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे गैप है तो उस गैप को कैसे एलिमिनेट करते हैं, ये तुम सबने क्लास 9 में ही सीखा था. क्या था वहां पे कंसेप्ट कि अगर यहाँ पे सपोज 24 होता, ओके और यहाँ 25 से स्टार्ट हो रहा है, ओके 39 मैंने लिख दिया. अगर कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है जहां पे ये ग्रुप डेटा तो है लेकिन देखो गैप है 24, 10 to 24 एंड देन 25 to 39, ऐसे डेटा है. ओके क्लास इंटरवल्स लाइक द एंडिंग पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, तो इसे मैच कैसे कराते थे? लेट मी हेल्प यू रिकॉल. ओके पहले देखते थे इन दोनों के बीच गैप कितना है. 24 पे एंड हो रहा है और 25 से शुरू हो रहा है, मतलब 1 है गैप, राइट. फिर क्या करते थे? 1 को 2 से डिवाइड करते थे, हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे जो भी गैप हो. ओके जो भी गैप हो उसे 2 से ही डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिलता था तब? 0.5. ओके और अब क्या करेंगे? ये जो 10 है इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते थे और 24 में 0.5 ऐड करते थे. आ रहा है याद सबको? आर यू एबल टू रिकॉल कि जब ग्रुप डेटा when we used to have the gaps like this, then this is how we used to fill the gap? Yes or no? Yes. तो हमारा 10 माइनस 0.5 क्या होगा? 9.5 एंड 24 प्लस 0.5 क्या होगा? 24.5. Getting it? Yes, ma'am. Okay similarly this one will be 24.5 and this one will be 39.5. Now we have eliminated the gaps. Can you see? So basically this is not there in our class and maybe you will not encounter such situation anytime, but in case in the question in exam it's like the data is given but there is a gap, so you know how to fill it. Okay and then only you will start finding the mean or whatever. So our data is like this: 10 to 25, okay, 25 to 40, 40 to 55, okay, 55 to 70, 70 to 85, and 85 to 90.
sorry, 100. And frequency, I'm just copy pasting from the above table. Okay, so actually we have not started solving it. Whatever I am writing it, it's a part of the question. 2 3 7 6 6 6. Okay, so this is how data was given. Now what we want to find? Frequency. But अभी जब हमारे पास अनग्रुप डेटा था तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारा डेटा पॉइंट था उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर ले रहे थे और फिर सारे को ऐड कर रहे थे और न्यूमरेटर में रख रहे थे. बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 में. 10 को मल्टीप्लाई करें, 25 को मल्टीप्लाई करें, या फिर 10 और 25 के बीच का कोई नंबर लेके मल्टीप्लाई करें. तो यस, ओके, हियर द कंफ्यूजन इज कि न्यूमरेटर में हम किसे मल्टीप्लाई करके लिखें. ओके, सो विल बी फाइंडिंग द क्लास मार्क, जिसका मतलब होता है कि जब भी ऐसा ग्रुप डेटा हमारे पास हो तो हम एग्जैक्टली बीच का पॉइंट निकालेंगे, 10 और 25 के एग्जैक्टली बीच का. और उसके लिए क्या है मेथड? 25 प्लस 10 बाई 2, ए प्लस बी बाई 2. ओके, बी प्लस ए बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, सेम थिंग. ये जो एंड पॉइंट हमें दिख रहे हैं इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. चलो ऐड करके देखते हैं हमें क्या मिलता है. 25 प्लस 10 दैट मीन्स 35 बाई 2. ओके, 2 1 टाइम्स 2. ओके, 2 7 टाइम्स 14, 2 5 17.5. 10 और 25 के एग्जैक्टली बीच का नंबर है 17.5. तो अब ये बीच का जो नंबर है इसे हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके मीन फाइंड करेंगे. एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? Yes, आर यू ma'am. गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes. Okay. Similarly, 25 plus 40 by 2. Please do the simplification and tell me quickly what will be there in the table. Yes, tell me what are you getting when you are adding 25 plus 40 by 2. Then what are you getting? But then when you are doing 40 plus 55 by 2, then what you are getting? When you are doing 55 70 by 2, then what are you getting? Okay, please find the class mark. Class mark का मतलब होता है exactly middle point हम find करने की कोशिश कर रहे हैं. Ma'am, the 25 plus 40 by 2 is 37.5. Yes. Okay. And 40 plus 55 by 2 is 47.5. Is it 30? This one is 32.5. 37.5. Let me check. 25 plus 40, 50, 60, 65 by 2. 2 3 times 6. 2 2 times 4. No, 32.5. Ma'am, I said 37. Check it. 65 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं. 7 नहीं आएगा. ध्यान से देखो, 65 है. 2 के टेबल में ही 6 आता है और बचा हमारे पास 5. 2 2 times 4. प्लीज चेक इट. Are you getting it? सिक्सटी फाइव को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 3 टाइम्स 6 आएगा, जो कि पूरा कैंसिल हो रहा है.
फिर 5 लिखेंगे, 2 times 4, 32.5 we are getting, right? Yes, 62.5. yes. For 55 to 70, I got 52.5. 62.5. Next one. 77.5. Okay, next one. 92.5. Everyone is getting the same. अब कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब जैसे पिछले वाले केस में हमने किया था, क्या किया था, जो हमारा डेटा पॉइंट्स था उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और फिर सारे को ऐड किया था. तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करने जा रहे हैं. वी विल बी डूइंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑफ आई विथ एक्स आई. वाई एक्स आई का मतलब होता है फर्स्ट वन इज x1, नेक्स्ट वन इज x2, नेक्स्ट वन इज x3, नेक्स्ट वन इज x4, नेक्स्ट वन इज x5, नेक्स्ट वन इज x6. ओके, इन सारे को कंबाइंड फॉर्म में हम एक्स आई लिखते हैं, जहां पे आई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. ओके, नेचुरल नंबर ऑल्सो यू कैन से, काउंटिंग नंबर यू कैन से. एफ आई क्या है, द फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, द थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी एंड सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट वाले में हमें इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है. 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 32.5 को 55. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 47.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 62.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लीज टेल मी. First one is 35. Okay, next one. It's 97.5. Next. $332.5. Next. $375. Okay, just 275. No, that one is 375. Okay, 375. Next. $465. Next. 555. Yes, what you said. Next one is 555. 555. Okay, these are just the multiplication. Still we need to add it. Okay. So how we used to multiply in the previous scenario, that is 17.5 into 2 plus 32.5 into 3
plus 47.5 into 7. This is how we used to do the multiplication and addition at the same time. So multiplication तो हमने कर लिया, अब हमें ऐड करना पड़ेगा इन सारे को. ओके, सो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई हमें फाइंड करना है. दिस इज कॉल्ड सिग्मा. ओके, दिस इज अ नोटेशन इन मैथमेटिक्स कॉल्ड सिग्मा, और इसका मतलब होता है समेशन. मतलब हम समेशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया है इस कॉलम में, इन सारे का सम फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोटेशन यूज किया मैथमेटिकल, दैट्स कॉल्ड सिग्मा. ओके, एंड वी यूज इट टू रिप्रेजेंट द समेशन. इस इस जो यहाँ पे ये जो सिंबल मैंने यूज किया है इसका नाम है सिग्मा. ओके, और ये कब यूज करते हैं? सम शो करने के लिए यूज करते हैं. तो ये हमें क्या मिलेगा? हम अगर सारे को ऐड करेंगे, लेट मी चेक इट फॉर क्विकली. So we'll be getting 1860. Okay, if we will be adding whatever you have found so far, if you will be adding all of them, what you have to add exactly? You have to add this 35 with this 97.5 with this 332.5 with this 375 with this 465 with this 555. All of this if you will add, you will be getting sigma of fi xi. That means summation of fi xi you will be getting, that is 1860. अब हमें डेनोमिनेटर भी तो फाइंड करना है. डेनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है उन सब का एडिशन. तो मतलब समेशन ऑफ दिस ऑल. यस, दैट मीन्स सिग्मा ऑफ एफ ऑफ आई. यस. कितने डेटा पॉइंट्स है हमारे पास? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक. टोटल 30 डेटा पॉइंट्स है. ओके, नाउ मीन फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा. वी रिप्रेजेंट मीन बाय एक्स बार. वी रिप्रेजेंट मीन बाय एक्स बार, और फॉर्मूला फॉर मीन इज जस्ट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो हमने फाइंड कर रखा ऑलरेडी ओवर समेशन ऑफ एफ ऑफ आई. मतलब 1860 by 30 and that will give us the mean. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जब ग्रुप डेटा होता है तब कैसे मीन फाइंड करते हैं? इज इट क्लियर? Yes. Okay, Yes. this is called the method for finding, direct method for finding the mean. Okay, इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्टली हम फाइंड कर रहे हैं. जस्ट एक क्लास मार्क निकाल रहे हैं. क्लास मार्क का मतलब है मिडिल पॉइंट निकाल रहे हैं. जो हमारे पास इंटरवल है उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट निकाल रहे हैं. और जो हम मीन फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस पहले हमने सीखा था, जस्ट सेम टू सेम वही प्रोसेस हमने रिपीट किया और हमने मीन फाइंड कर लिया. इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम और भी मेथड्स डिस्कस करेंगे. और भी हमारे पास मेथड्स है जो हमें मीन फाइंड करने में हेल्प करते हैं. अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन वी विल बी थिंकिंग अबाउट द मेथड. बट नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले just practice this question completely by yourself with this table, with the original question, this one, this table. Okay, try finding the mean by yourself completely and check करना अच्छे से हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि next class में we'll be discussing different approaches and everything in this chapter. This is very simple concept. Only the problem is you can just get mixed up with the concept. The first method, second method, third method, सारे methods जब सीख लेंगे तो हो सकता है कि just mind में mix हो जाए सारे methods और याद ना आए जब exam में. Okay, so practice it before the next class. Is it clear? Yes. Is it clear to all of you? Okay, I'm keeping this much over here. Let's continue the same in the next class. No assessment. Thank you, everyone. Take care of yourself.
Hello everyone, how are you all? Hi Sarah, hi Arhan, hi Bharti, hi Afrin, how are you all? Fine, ma'am. What about you? Yeah, I'm also good. Okay, so yeah, let's continue the discussion. I think today or in the next class we'll be able to cover this chapter completely. Okay, so volume of the sphere, today we'll be having the discussion from that. Okay, so we are going to having a discussion from volume of a sphere. For volume of a sphere, we already know what is a sphere. Okay, for volume of a sphere, we are having the direct formula, that is volume of a sphere formula is, you don't need to understand like in detail from where we got it or what. Okay, 4 by 3 pi r cube. Okay, this is the formula for finding the volume of the sphere. Similarly, for finding the volume of hemisphere, the formula is this formula divided by 2, and when you will divide by 2, this 4 will get cancelled and it will become 2 by 3 pi r cube. Okay, so these are the formulas for volume of the sphere and the volume of the hemisphere. You just need to know the formula. Okay, we'll be solving question based on this concept. Questions are important from where we got the formula, that is not important. However, previously we have discussed from where we are getting the formula. This formula we are not going to discuss because that is, I think, beyond your scope. So leave it like that and just keep it in your mind. This is the formula we are having. Let's solve few questions. Okay, everyone note down the formula, that these are the formula. I'm going to give you few questions where we'll be discussing. Straightforward question also we'll be doing, and tricky questions also we'll be doing. Okay, so first one is find the volume of a sphere whose radius is 0.63 meter. Please find the volume now. See, the formula for finding the volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. Okay, use the formula. Here only I have written the formula. This one. Okay. 4 by 3 pi r cube is the formula for finding the volume of the sphere. By using this formula, find the volume of the given sphere. This one. Please do it now.
Yes, what you got? If the radius is 0.63 meter, what is the volume? 4 by 3 pi. You can take it as a 22 by 7 into r cube. That means 0.63. Again 0.63. Again 0.63. Please tell me the answer. Ma'am, I'm getting 1.047816. Let me check. Okay, it seems like it will be divisible by 3. Or 0.63 you can write as a 63 by 100 as well. Your wish. Okay, I am comfortable like that. Okay, let me write it as a 63 by 100. It is nothing but 63 by 100, 63 by 100 and 63 by 100. Okay, 22 by 7 still we are having and 4 by 3 still we are having. Okay, let's do the cancellation. So 3, 2 times 6, 3, 1 times 3, 7, 3 times 21. Okay, so basically we got 4, 22, 3, 63, 63. Okay, by 100, 100, 100, I am not doing anything with that because I will put the decimal accordingly. Okay. So 63, this 22 into 4 is, let me check what is that. 88. 3 times 9, 18 and 63. Okay, it will be huge. Okay, no worries. We have to do it. Okay, let me check. 88, 63. Please do it your way, okay, and do the multiplication between all this, okay. So 5544 and then 189. Do the multiplication, no? Check it. What are you getting? Let me check. Yeah, it will take time, but you must be getting this one. But by this 100, 100, 100 was still there. Okay. This 100, 100, 100 was still there. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6. So from the last, I'll be counting 1, 2, 3, 4, 5, 6. And here I'll put the decimal. And we are done. Are you getting it? It is time taking, but you have to do it like this only. Are you getting it? Yes, ma'am. Okay, let's move. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter. Find the amount of water displaced by solid spherical ball of diameter 28 centimeter. See, amount of water it will displace. Just a second. Yeah. Find the amount of water displaced by solid spherical ball. Of course, when we put
the ice in a glass which is already filled, the water will start flowing. When the cup is already filled with tea or coffee or water, when you will put a spoon in that, the water level will come up. Why? Because of the volume of the object which you are just putting in that, right? Similarly, find the amount of water displaced by solid spherical ball. If a bucket you are having, okay, and in this bucket, suppose this much water is there. Now I am going to just drop a ball or spherical ball in this. Due to this spherical ball, the water level came over here. It can be the case, yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Why it happens? Due to the volume of this object. Okay, how much water level will come up? According to the volume of the sphere. Okay, whatever be the volume of the sphere will be, that much water level, that much water level will come up. Okay, so only the height is not increasing. If I am saying the volume is increasing, okay, previously the water level was like till here, and then the volume increase, okay, due to the volume of the sphere. So when the question says how much water is displaced by a solid spherical ball, that means it will displace water according to its volume. It will displace water according to its volume. That means, do we have to find the volume of the sphere over here also? Yes, we do have to find the volume of the sphere over here also. Okay. Please find the volume of this sphere whose diameter is 28 centimeter. Volume of the sphere whose diameter is 28 centimeter. Please find it.